मार्केट पर्सन में आज हमें ज्वाइन किया है वैंग जीजियान. ही इज रीजनल मैनेजर शेंगली ऑयल फील्ड्स, शेंगली पावर मशीनरी ग्रुप कंपनी लिमिटेड. वैंग, वेलकम टू द शो. एंड विद हिम वी हैव मुनीर गोडिल साहब, आप प्रिंसिपल इंजीनियर हैं MG इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के. मुनीर साहब, वेलकम करते हैं. थैंक यू. Wayne, first of all, you tell me that how has been your experience in Pakistan in the mills which have already done a lot of investment in captive power plants, how effective they are, and what kind of facilities do you feel they are able to provide to the people who provide them with the orders in time? Do you feel that the people who have invested so much money in Pakistan and they have got captive power plants, they are able to meet at least the energy needs which they need at the moment? Yes. Everybody knows that now Pakistan is suffering a huge natural gas shortage, and Pakistan's power supplies rely on this kind of energy. So nowadays, most of the industries and the people's life is badly influenced because of this reason. So nowadays, Pakistan have found very good coal sources, which is one of the biggest in Asia area. So that means there may be a very good chance for Pakistan to start a new energy solution. So that means coal-based solutions. You know, what we are trying... captive power plants, they can be run with gas and with coal also. Like they can only be used using gas, and gas is the only solution for captive power plants. How do they generate the energy? What kind of raw material do they need? Okay, here I'd like to give a brief introduction about the co-gasification power plant. That is a kind of power solution based on the co-gasification. There will be several important components. Number one will be the coal source. Number two, it is a gasifier. The coal, after the gasification, can become the coal gas, which is a kind of low BTU syngas. That kind of gas, after the cleaning system, can be directly used in the inner combustion engine for power generating purpose. The captive power plants which are already in Pakistan, what kind of raw material are they using to generate electricity? Nowadays, most of the industries rely on the natural gas, and their natural gas generators is there for power generating purpose. Right. Muneer sahab, gas ही चाहिए ना captive power plants को, या कोई और भी सोर्स जिसके जरिए बिजली पैदा कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको हम एलोबरेट करते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को कि ये एनर्जी क्राइसिस है क्या और हमारा एनर्जी मिक्स क्या था. हमारा बेसिकली एनर्जी मिक्स में आज भी अगर आप देखें तो बेसिकली 33% हाइड्रल मौजूद है, जो हमें वापडा और KEC को पार्शली फीड कर रहा है, विच इज 33%. बाकी जो 40% है हमारे IPPs या वापडा और थर्मल, वो बेसिकली 40% नेचुरल गैस पे है और ओनली 20% इज ऑन थर्मल, जो ऑयल पे है हमारे. कमिंग बैक टू कैप्टिव पावर प्लांट्स, अगर स्पेसिफिकली हम कैप्टिव पावर प्लांट की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, फिर गैस पाइपलाइन भी वो कहते हैं कि जी हमने बिछाई है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने की है, और लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जी गैस की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते. बेसिकली वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो गैस है वो बेसिकली आपने यूटिलाइज की है, और अभी सप्लाई और डिमांड का एक डिफरेंस आ गया. आपकी बेसिकली विंटर में डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ड्यू टू और होम अप्लाइंसेस की वजह से, क्योंकि विंटर सीजन आता है आपके नॉर्दर्न एरियाज में एक प्रेशर बढ़ता है, और बेसिकली द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेसिडेंशियल कंज्यूमर. सो वो बेसिकली जो आपकी कंपनीज हैं SNGPL और SSGC, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि रेसिडेंशियल एंड देन द इंडस्ट्रियल. सो द कैप्टिव पावर प्लांट्स कम इन द सेकंड प्रायोरिटी एंड द इंडस्ट्रियल एंड फर्टिलाइजर्स कम इन द लाइन. तो बेसिकली वो रेसिडेंशियल को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं. इसलिए अभी आप जैसे देख रहे हैं पंजाब में कोई 4 दिन का हम शॉर्टफॉल फेस कर रहे हैं, पर कराची में शुरू हो चुका है, सिंध में 1 दिन का. CNG को हमने शट ऑफ किया हुआ है फॉर कमिंग बैक टू कैप्टिव पावर प्लांट्स, क्या रॉ मटेरियल सिर्फ गैस के जरिए ही? सर गैस के जरिए भी हो रहा है. यही गैस पहले फर्नेस ऑयल पे कर रहे थे, क्योंकि फर्नेस ऑयल एक महंगा मुतबादल है, महंगा सोर्स है. नेचुरल गैस वाज अ चीपर सोल्यूशन, सो पीपल हैव मूव्ड टू कैप्टिव पावर प्लांट इन गैस. बेसिकली अब आपके पास 2 सोल्यूशन मौजूद हैं, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी इन शॉर्ट टर्म नजर नहीं आ रही. तो आपको एक रोड मैप डेवलप करना पड़ेगा कि जी गैस के अलावा कौन सी सोल्यूशन अवेलेबल है. और पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में आपका कोल कहीं अभी है ही नहीं, इज जीरो एट द मोमेंट. तो कोल के जरिए भी कैप्टिव पावर प्लांट्स बिल्कुल ये करना पड़ेगा, और ये हमारा वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर प्लांट्स. So if coal can be used as raw material, do you feel that the
quality of coal which is available in Tharpak or in Sindh, the place where we are sitting, Sindh, this province, do you feel that the coal which is available, that is of the good quality which can be used to generate electricity in captive power plants? Yes, there are several very good coal sources in Pakistan. And of course, some of the coal is imported from Indonesia, South Africa, and so on, these countries. Actually, we have done so many homeworks before entering this market, and we have done many tests of the local coal sources, and we have found some right coal sources already. And this coal gasification plant, like what has been done so far at particular moment, right? What do you see? And do you think that this coal gasification plant, once the project is complete, the captive power plants would be able to get the raw material in this particular shape, and that will be quite beneficial for the captive power plant generators, the people who have invested so much money in captive power plants? And do you feel that the cost will come down drastically? How to say, that is two kinds of generating system. It is a little different. Everybody knows that using the natural gas is much easier and with very low running cost. But the problem is nowadays the gas shortage have already badly influenced their production. So they need to solve this problem. That's most important. We've seen that electricity is being generated through different sources. Solar is one thing, wind is another thing, but tidal is also one of the sources through which electricity is being generated. Captive power plants, apart from gas and oil, what other source can be used to generate electricity through captive power plants by the individual industrialists, the people who invest money? Usually this kind of power supply system usually mainly done by the government. But due to the development, the requirements increases very fast. So the construction won't be as fast as the demands increasing. So there's a gap here. So for private companies especially, they need to fill this gap with their own hands. So of course, Pakistan is a little different from other countries. Take China and some other countries, for example. Most of the power is generated by coal. But here in Pakistan, most of the power is by natural gas. So once there's natural gas, that means the influence will be much bigger than in other countries. Right. वैंग ने कहा कि चाइना में जो है बड़े पैमाने पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. हम जानते हैं कि मोर देन 70% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन चाइना इज थ्रू कोल. पाकिस्तान में एक तो बायोगैस के हवाले से अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि बायोगैस के जरिए हम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरा कोल जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे हैं, किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है और कितना टाइम लगेगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे. बायोगैस के लिए आपको बेसिकली रॉ मटेरियल इज योर वेस्टेज और वॉट एवर इज द बायोमास अवेलेबल. एक्चुअली अगर आप उसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो अभी तक हमारा कोई रॉ मटेरियल का प्रॉपर गैदरिंग सिस्टम इन एनी सिटी आप देखें तो प्रॉपर है नहीं. और बेसिकली उसको पहले डेवलप करना, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो बायोगैस का हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लाइक काउडंग हो गया, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया. दीज प्रोजेक्ट्स वी आर बीन टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग बट नथिंग हैज बीन मटेरियलाइज्ड अप टिल नाउ. तो बेसिकली सोल्यूशन ऐसा चाहिए जो शॉर्ट टर्म में हो, फिर एक मीडियम टर्म पॉलिसी हो, एक रोड मैप डेवलप हो और एक लॉन्ग टर्म हो. लाइक थरकोल प्रोजेक्ट बाय समर मुबारक साहब, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. इट विल टेक कपल ऑफ इयर्स टू कम इन बिकॉज अभी उनकी गैस फायर हो गई है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की. वो कोल फायर अब वो टेस्टिंग की मोड पे जा रहे हैं. पावर प्लांट विल कम, इट विल बी इंस्टॉल्ड, टेस्टिंग प्रोसीजर विल बी डन एंड आफ्टर दैट विल बी कनेक्टेड टू नेशनल ग्रिड एंड इट विल कम ऑन मास लेवल. बट अभी हमें सबसे फुटिंग स्टेप ये है कि जो अभी आपने कहा कि जी हमारे पास इतना रिजर्व है, हमारा कोल जो है बेसिकली उसकी सल्फर कंटेंट हाई है. तो सिस्टम्स कैन बी डिजाइन कि उसको हम हाई प्रेशर बॉयलर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लो प्रेशर बॉयलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और उससे हम पावर भी जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, आपने सल्फर की बात की. हम अगर पाकिस्तान के कोल की बात करें तो ये कहा जाता है कि सल्फर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है. यही बात हमने देखा कि अबू धाबी में जो गैस है, बहुत ज़्यादा गैस है अबू धाबी में, लेकिन वहाँ भी ये कहा जाता है कि सल्फर की चूँकि मिकदार ज़्यादा है तो वो गैस इस्तेमाल नहीं की जा सकती. तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो है इस खासतौर पर इस पर काबू पाया जा सकता है? सल्फर कंटेंट जब हाई होता है तो सर्टेन प्रिकॉशंस लेनी होती है आपको डिजाइन स्टेज पे, और उसी डिजाइन स्टेज में जब आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते